His research, specializations are mathematical statistics, ordinary differential equations. His research is in survival analysis. He has expertise in handling various softwares like PSS, Stata, R programming, Winworks, Excel, Scilab, and many more. He has published research papers in national and international journals and presented papers in many national and international conferences in the field of survival analysis throughout India. He has conducted several R courses in all over India. So he is very much associated with our this Science Tech Institute. So we are really thankful on behalf of organizing committee and my own behalf. I welcome to our esteemed resource person. So thank you so much, sir, for being with us. Whenever we regard your expertise and experience, you are always with us. So on behalf of organizing committee, my own behalf, and behalf of all the participants who has joined, so welcome you, sir. And we are really thankful to the participants also for joining this, very important training program. Because this is can say that it's just a latest technology that is used. So before starting, I just want to give you brief outline about this 7 days program. So in the first day, that is today, we will talk about the introductory part of R and R Studio. Then in the tomorrow's session, we will talk about supervised learning like simple and multiple linear regression, logistic third day, logistic and Poisson regression. Day 4, we will cover the decision tree and random forest. They are very popular machine learning techniques. Then day 5, Navy-based classification and time series analysis. Then days 6 and 7, we will cover the unsupervised machine learning techniques like cluster analysis and principal component analysis. So this is a brief outline about the upcoming 7 days. So with this, I am thankful to the Science Tech Institute for giving me this opportunity to the responsibility of organizing secretary for this particular training program. So thanks to the society also. So thank you so much, sir. It's over to you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Dhanmin, for knowing about this workshop. Professor workshop joining this workshop, and Mr. Ramkrishnan has earlier also delivered a talk in the Science Tech Institute earlier workshop. And here also Dr. Dilshad Ahmed sir is the convener of this workshop, and Dr. Neha Singh, and she is the co-organizing secretary of this workshop, and he is the senior scientist in virology department. So now I would like to invite Dr. Dilshad Ahmed sir. Dr. Dilshad Ahmed sir, he will tell about this workshop and about the institute. Dr. Dilshad Ahmed sir. हमारा वीडियो आपकी तरफ से ऑफ है. अच्छा. Just a minute. Yeah, please. अब आप ऑन कर सकते हैं. अभी भी ले नहीं रहा है. Okay. Dr. Dilshad Ahmed is a senior professor in the Islamic Degree College, situated in Lucknow. So, Dr. Dilshad Ahmed sir, please continue. आज जो है 1 वीक ऑनलाइन वर्कशॉप जो है मशीन लर्निंग यूजिंग आर, आज 25 से लेके जो है आपका 1 मई तक ये जो है संचालित होने जा रहा है, जो कि कुंवर मनराज सिंह सोसाइटी के द्वारा ये रन किया जा रहा है. कुंवर मनराज सिंह सोसाइटी जो है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है लखनऊ का, जो ऑर्गेनाइज कराती है जो वेरियस एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, एफडीपी के लिए, सेमिनार के लिए, वर्कशॉप के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए. और ये जो है हमारा आर्यभट्ट के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है, उनके साथ भी ये प्रोग्राम चल रहा है. और उनका एक पब्लिकेशन हाउस भी है जो जर्नल भी निकालती है, बुक्स भी निकालती है, रिसर्च पेपर्स भी, मैगजीन भी. ये सारे जो है काम सक्सेसफुली लखनऊ के अंदर ऑलरेडी कर रही है और काफ़ी फेमस है. और इसी के सौजन्य से 1 हफ्ते का ये प्रोग्राम किया गया है मशीन लर्निंग के ऊपर, जो कि एक सॉफ्टवेयर है आर, जो नया सॉफ्टवेयर आ रहा है
इसी बीच में हमारे डॉक्टर एम रामकृष्णन जी, जो प्रोफेसर हैं पीजी अनुसंधान विभाग गणित, रामकृष्ण विवेकानंद कॉलेज मायलापुर से जो है अपनी इस आर के बारे में बताएंगे। जो आर तकनीक है, जो है विज्ञान तकनीक संस्थान सांख्यिकी विभाग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और विभिन्न डोमेन के पेशेवरों के लिए इनके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया इंगित करती है कि वहां सांख्यिकी विधियों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मानक सांख्यिकी सॉफ्टवेयर जैसे RSPSS, RP, RPSS आदि पर उपयोग करने के विश्लेषण आर ये मुफ्त सॉफ्टवेयर है। विशाल उपयोगकर्ता समुदाय इसके लिए जो है हमेशा तत्पर रहता है, इसलिए इसका व्यापक रूप सांख्यिकी डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। सांख्यिकी सॉफ्टवेयर का अनुसंधान बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने के लिए समय को कम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उपयोगिता का प्रयोग किया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए नीति निर्माताओं को अंतर्दृष्टि प्रदान करने आजकल हमारे पास बड़ी मात्रा में डेटा को प्रमाणित सांख्यिकी विधियों के साथ विश्लेषण नहीं कर सकता है। ऐसे विश्लेषण के लिए परिष्कृत मशीन सीखने की तकनीक की जरूरत है, इसलिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनुसंधान में लगे पेशेवरों के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा रहा है और इसका जो है विश्लेषण पूरी तरीके से डॉक्टर रामकृष्णन जी, जो कि सहायक प्रोफेसर हैं पीजी अनुसंधान विभाग के, ये आपको डिटेल से बताएंगे। हमें पूरी आशा है कि 7 दिन तक ये प्रोग्राम जो चलेगा सभी को कुछ न कुछ नया इसमें सीखने को मिलेगा और उसकी उपयोगिता के बारे में सबको पता लगेगा। और हमारे धर्मेंद्र जी इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि सांख्यिकी विभाग से खुद ताल्लुक रखते हैं, और हमारे डॉक्टर सुशील जी, ये भी जो है फिजिक्स से हैं। तो इस प्रोग्राम को जो है सक्सेसफुल बनाने के लिए जिनका काफ़ी योगदान रहा है, और हम सभी को अपनी तरफ से वेलकम करते हैं। आशा है कि सभी को इस कार्यक्रम में बहुत ही आनंददायक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। थैंक यू सर। Thank you, Dr. Dilshad ji, for coming to in this platform. And now I would like to invite Dr. Neha Singh. She is the senior scientist in biology department, Pandit JNM from Ranchi. So, Dr. Neha, I'm audible. Dr. Neha, I'm audible. Yeah, please check whether she is unmuted or. Dr. Dharmen, madam. Yes, madam, please. Yeah. So I'm very much thankful to all of you, like taking me in a loop, and I'll be very thankful to MKSS, this society, who is conducting this very nice program, and I guess it will be very helpful for the all researcher and scientists, as well as for the all academic staff. So, and I'm really very thankful to all of you and being part of this, and I welcome all the participants and hope we will be learning in a very nice direction for this program, which will be helpful for their this research and academic thing. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for coming in this platform. And thank you, sir. Yes, thank you. And I would like to call Dr. Dharmen. Dr. Dharmen, please continue this session. Yeah, thank you. Thanks to all the organizing committee members, and special thanks to the the director of Science Tech Institute, which is the premier institute, as Dr. Dilshad Ahmed has told. They are doing a wonderful job all over India. Okay, so he has this particular training program it's a first type of training program, you can say that, all over in North India actually. So as for I am, because I'm also person of this AI and machine learning technique, so it was really a